कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच
लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि इस लाइव स्ट्रीमिंग को लाइक कीजिए। हम यहाँ पे पूरे मैचेस दिखाएंगे, जितने भी मैचेस हैं वो हम पूरे के पूरे मैचेस दिखाएंगे। अभी हम थोड़ा सा टाइम ही रह गया है, हम यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करेंगे, तो आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। हम मैच यहाँ पे लाइव दिखाएंगे, लाइव एक्शन दिखाएंगे, तो आप लोगों ने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और शेयर ज़रूर करना है और लाइक भी करना है। शुक्रिया। मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स। आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और शेयर ज़रूर करना है। यहाँ पे हम फ़िलहाल हाइलाइट्स चला रहे हैं और जैसे मैच शुरू होगा हम लाइव मैच दिखाएंगे यहाँ पे, तो आप लोगों ने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। शुक्रिया। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए
कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने गाइस आप अपनी स्क्रीन की राइट साइड पर कमेंट सेक्शन देख सकते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें आप कर सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन का आंसर लाइव कमेंट्री में आपका नेम मेंशन करके ज़रूर देना चाहेंगे। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टर्की मैच जो है 10 बजे मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हम अपने चैनल पर ये मैच लाइव टेलीकास्ट करके आपको दिखाना चाहेंगे, जिसमें हम आपको लाइव स्कोर विद कमेंट्री की मैच दिखाएंगे। आप अपनी स्क्रीन की राइट साइड पर कमेंट सेक्शन देख सकते हैं। अगर आप कोई भी कमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का आंसर लाइव कमेंट्री में आपका नेम मेंशन करके ज़रूर देंगे।
लाइव मैच देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट्स में पिन है। लाइव मैच लिंक इन कमेंट्स। लाइव मैच देखने के लिए लिंक कमेंट। Puts the ball right under pressure. 18 fours, 5 sixes in this innings for Pakistan. Look at the feed, 62 from 29. There's a slower ball bouncer. Too short. Plenty of time to pick his gap. Well, he's looking for the boundary and wow, good effort there from Morgan. He'll feel disappointed. But it was a tough effort. The over 188 for 3. 11 from the over. हमारे पास अब तीसरा T20 पाकिस्तान PTV अभी तक नहीं करा चुका है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जाने when the results are not going in your favor. But obviously as a coach, you need more patience than as a player. So it's there working hard, trying to just give confidence to the players and try to just improve your strengths and get rid of wherever we lack. So
I mean, it is learning curve for you throughout your life, and hopefully I think this team is all about learning everything, putting their hard work in, and that's what I'm really pleased with them, especially after the first test match, disappointing loss from that situation, the way team fought back in the next couple of test matches. That is something pleasing for me as a coach, good mental strength. So I think these young players can develop into such a good team in future. We saw some shots of you looking frustrated at times. Is it a frustrating job being a coach? Sometimes, obviously, when the things are not going your way, when you are at the top, suddenly just rain, and suddenly opposition just snatches the match out of your hands. It could be frustrating, but obviously the key for a coach, for me also, just to stay calm. This is how your team just stays calm. If you just show that, and sometimes if you are in that sort of situation, it could create panic. So it is also important for us as a coaching staff that we stay calm, because these situations always there in a cricket game. It could happen to you or it could happen to opposition. Misbah, best of luck today. Thanks. Thank you. He was looking very calm, and the way we know Misbah in that interview, but he was looking anything but calm in that dressing room, and Pakistan were going for runs and eventually lost the match too. We'll take a very short break here on Straight Drive. We'll be back far away from the toss desk. आपका फूड ऑर्डर जीते से ऑर्डर करो कुछ भी कभी भी कहीं भी यूज कोड जीते एंड गेट फ्लैट 40% ऑफ। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि इस लाइव स्ट्रीमिंग को लाइक कीजिए। हम यहाँ पे पूरा मैच दिखाएंगे, और चैनल पे नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैच शुरू होने वाला है अब से थोड़ी देर बाद। तेजी से बनाए, दाग भी निकलेंगे तेजी से। नया सर्फ एक्सेल 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। आपका फूड ऑर्डर जीते से ऑर्डर करो कुछ भी कभी भी कहीं भी यूज कोड जीते एंड गेट फ्लैट 40% ऑफ ऑन फूड एंड 15% ऑफ ऑन फार्मा एंड ग्रोसरी। बस मिलाओ *506# for Jazz Weekly Supermax। सुपर नहीं तो 4G नहीं, पाकिस्तान नंबर 1 नेटवर्क। दुनिया को बता दो। क्या ये दाग रगड़े बिना निकलेंगे? तो हो जाए मुकाबला। रगड़ा वर्सेस नया एरियल तगड़ा। नया और पहले से बेहतर एरियल, जिसका डबल एक्शन फॉर्मूला करे गहराई से सफाई सिर्फ एक धुलाई में। आपकी तरह सॉलिड अमरीली स्टील्स, जब दिल चाहे जहां दिल चाहे। DNN's biggest dream of a fresh goodness। बस 10 मिनट रखिए, निकालिए और कीजिए गर्मा गर्म एंजॉय। DNN's biggest dream of a fresh goodness। तेज ये हाथ चलाए, तेज सब कुछ करे बिरयानी। बड़ी तेजी से बनाए, दाग भी निकलेंगे तेजी से। नया सर्फ एक्सेल 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। बस मिलाओ *506# for Jazz Weekly Supermax। सुपर नहीं तो 4G नहीं, पाकिस्तान नंबर 1 नेटवर्क। दुनिया को बता दो। निकलेंगे तो हो जाए मुकाबला। रगड़ा वर्सेस नया एरियल तगड़ा। नया और पहले से बेहतर एरियल, जिसका डबल एक्शन फॉर्मूला करे गहराई से सफाई सिर्फ एक धुलाई में। बस मिलाओ *506# for Jazz Weekly Supermax। सुपर नहीं तो 4G नहीं, पाकिस्तान नंबर 1 नेटवर्क। दुनिया को बता दो। आपकी तरह सॉलिड अमरीली स्टील्स। Introducing Peak Cream's Choco Lava। Peak Cream's Choco Lava, bigger and chunkier।
dry. Of course, we're not very far away from the toss now. The news is that, of course, Haider Ali has got the cap and will be playing for Pakistan today. Finally, the right decision, Ramesh bhai. हाँ यार वही बात है, देर कर दी बहुत, पहले मैच में खिला देना चाहिए था, अभी तक बहुत रिलैक्स होते हैं, अब पता नहीं इतनी ज्यादा we have talked him up so much that I hope that he doesn't feel the pressure because नए लड़के को खिलाने का मकसद ही ये होता है कि he doesn't carry any extra baggage of expectations, जाए और जाके अपने खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करें और अच्छी बात यह है कि इनमें पोटेंशियल है और टैलेंट बड़ा जबरदस्त है, सो किसी भी जगह पे फ्लोटिंग बैटिंग ऑर्डर में ही एडजस्ट कर लेंगे। मैं तो चाहूंगा कि किसी भी न्यू एंट्रेंट को ऊपर के नंबर्स पे खिलाएं, जब वहां पे प्रेशर कम होता है या आपको गेम जितवा सकते हैं, इतनी इनमें एबिलिटी है और सेट हो गए तो फिर जैसे हमने बात की थी कि इज क्वाइट केपेबल ऑफ हिटिंग द बिग सिक्स एज वेल, सो I just hope that he doesn't feel the pressure of expectations. It's a very consequential match for Pakistan, of course, Basit. For Haider Ali's cause, of course, well, we will get back to Basit, but I think we are ready for the toss and the two captains and match referee are waiting in the mid. Toss has been won by Owen, who's going to come over and have a chat to us. Owen, what are you going to do? We're going to have a bowl first. What does the pitch look like? It's a different pitch today. Yeah, it's a fresh pitch. I think it looks a little bit drier probably than the first game that we played, but it still looks good. The wickets have been magnificent here, offered a little bit for the bowlers, but probably more so for the batsmen, and obviously one short side over to the left-hand side here. Yeah, you're going to have bowlers queuing up, aren't you? Asking you to bowl one end with that short side. No, I think when you start looking at it like that from a bowling point of view, you sort of get caught off guard. So I think the honest answer to that is there is no hiding place in T20 cricket. It can be brutal at times, and I think sometimes you can overhype sort of one short side and compensate another. So hopefully your plans work a little bit better today. You haven't made any changes so far in the series. Are you making any today? No, none today. I think if we'd have played 3 games, we'd have liked to have made a couple of changes, but given the circumstances with the rain around, we'd like to give guys another run out today. What are you going to do slightly better, or hope to do slightly better with the ball? Obviously things went well with the bat last game. Yeah, I think we'll be another game into our summer. Guys haven't played a lot of cricket yet. T20 cricket is very unforgiving for bowlers, so we'll be better for the run the other day and hopefully come on a yard or so. Okay, good luck. Thank you. Baba will come in. Baba, what would you have done had you won the toss? बिल्कुल जी, हमने भी प्लान किया था कि हमने बॉलिंग करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टॉस हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बैटिंग आई है तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छा टोटल दें. We have planned to bowl first, but unfortunately we didn't win the toss, but we will try to post good total. You got 1 or 2 injuries. Are you making any changes today? बिल्कुल, हमारी 3 चेंजेस है. हैदर अली डेब्यू है, सरफराज अहमद आए हैं वापस और वहाब रियाज. Yeah, we have 3 changes. Haider Ali is going to be debut today, and then Sarfraz Ahmed wicketkeeper, and Wahab Riaz instead of Amir. And finally, how important is it for you and the team to finish on a high today? Last match for you. बिल्कुल जी, हमारा हाई नोट पे फिनिश करने का पूरा प्लान है और कोशिश करेंगे कि अच्छा मैच फिनिश हो, और हम पूरे कॉन्फिडेंस हैं पूरी टीम, और इंशाल्लाह अच्छा मैच देखने को मिलेगा. Yeah, definitely we want to finish with a high note to win the series, and the team is very confident. Inshallah we will win. Okay, good luck to you and the team. Thank you. So England won the toss. They are going to... So of course, England won the toss and elected to field. Basit, of course, the way things have gone, उनके लिए तो ideal था कि आज वो bowling कराते. Yes. Also, the ground supports fielding first and chasing here, especially in T20s. There's a big sort of bias towards chasing. So England obviously would, from the first T20I, they wanted to field first in every game, and exactly the same with Pakistan. So again, their bowling is slightly light. We discussed this earlier. They're missing a huge number of bowlers in this squad. So the batting slightly better. So they're trusting their batting to do the same and win in the game.
Of course, we will find that out. But what we know is the teams for the respective Pakistan and England, and this is England first, which is unchanged. Tom Panton at the top, Johnny Bairstow, both gave a great start to them the other day. David Malan and Owen Morgan, the ones who affected the victory. For Pakistan's cause, there are 3 changes. Haider Ali comes in, so does Sarfaraz Ahmed, the former Pakistan captain, and Wahab Riaz in place of the injured Muhammad Amir. Haider Ali, we've talked about it. Sarfaraz Ahmed, how do you see that change, Ramesh bhai? पसंद है मुझे यार. I like Sarfaraz Ahmed in T20 and 50 overs 11. इसलिए कि he can still offer a lot, especially with the bat. He can play that clinical knock, under pressure. और कीपिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं T20 क्रिकेट में. So अच्छी चेंज है और वहाँ भी ठीक ठाक चेंजेस आज ठीक ठाक ही की है. हैदर अली जो है वो ऊपर खिलाए तो अच्छा. इसका मतलब ये है क्योंकि इफ्तिखार बार हो गए कि शोएब और हफीज में से किसी को थोड़े से ओवर्स करने पड़ेंगे. अब पता नहीं रिलक्टेंट ऑफ स्पिनर इन दोनों में से कौन है, टॉस करना पड़ेगा. मेरे ख्याल से हफीज very much into ball because उनका काफी अच्छा रिकॉर्ड है. It was only the fact that he was banned for his action so many times that was the reason that कई बहुत कम action में रहे. But his choice for Pakistan against left-handers. We'll take a very short break. Here the news once again is that England have won the toss and elected to field. We'll have lots more on the inside. Stay with us. मुझे तुम्हारा फ्यूचर रोशन नजर आ रहा है. जबरदस्त एडवेंचर्स, कामयाब बिजनेस और रोमांस. तुमने ये सब मेरे हाथ से पढ़ा है? हाँ, मगर इससे नहीं डियर, इससे. Red Bull gives you wings. क्या ये दाग रगड़े बिना निकलेंगे? तो हो जाए मुकाबला. रगड़ा वर्सेस नया एरियल तगड़ा. नया और पहले से बेहतर एरियल, जिसका डबल एक्शन फॉर्मूला करे गहराई से सफाई सिर्फ एक धुलाई में. कपाल दानेदार, बेहतरीन रंग, खुशबू और जायका. मुझे मिस कर रही थी ना? जी नहीं, तुम्हारे दोस्त होंगे नहीं, सोचा मैं ही कंपनी दे दूं. 100 दोस्त तो मैं अब यूं ही बना लूंगी. तो फिर चलती रहे तुम, मैं और एक कप चाय. कपाल दानेदार. आपका फूड का ऑर्डर. चीते से ऑर्डर करो कुछ भी कभी भी कहीं भी. यूज कोड चीते and get flat 40% off on food and 15% off on pharma and grocery. जब दिल चाहे जहाँ दिल चाहे. KNN's biggest street of fresh goodness. बस 10 मिनट रखिए, निकालिए और कीजिए गर्मा गर्म enjoy. KNN's biggest street of fresh goodness. आपकी तरह सॉलिड. अमरीली स्टील्स. Introducing Peak Cream's Choco Lava. Peak Cream's Choco Lava. Bigger and chunkier. आपका फूड का ऑर्डर. चीते से ऑर्डर करो कुछ भी कभी भी कहीं भी. यूज कोड चीते and get flat 40% off on food and 15% off on pharma and grocery. पिछले 50 साल की तरह हम ऐसी ही खुशी बांटते रहेंगे. Peak Creams. Spread the joy. आपकी तरह सॉलिड. अमरीली स्टील्स. आपका फूड का ऑर्डर. चीते से ऑर्डर करो कुछ भी कभी भी कहीं भी. यूज कोड चीते and get flat 40% off on food and 15% off on pharma and grocery. जब दिल चाहे जहाँ दिल चाहे. KNN's biggest street of fresh goodness. बस 10 मिनट रखिए, निकालिए और कीजिए गर्मा गर्म enjoy. KNN's biggest street of fresh goodness. क्या ये दाग रगड़े बिना निकलेंगे? तो हो जाए मुकाबला. रगड़ा वर्सेस नया एरियल तगड़ा. नया और पहले से बेहतर एरियल, जिसका डबल एक्शन फॉर्मूला करे गहराई से सफाई सिर्फ एक धुलाई में. चाय के चाहने वालों के अंदाज गई, और जो समझे हर एक निराले अंदाज को, वो है कपाल, हमारी नेशनैलिटी.
drive. So the big news for Pakistan's perspective is that Haider Ali is going to make his debut. The 19-year-old exciting batsman from Attak is going to make his debut for Pakistan today in the third and final T20 international in Manchester. So of course England won the toss and elected to field. They have gone unchanged in this one. All three matches with the same team. Tom Banton at the top, Johnny Bairstow with him as the opening partner, David Malan and Owen Morgan. And as we see come down, Lewis Gregory, who's not very impressive, and he'd like to get among the wickets because he was maybe a bit of a loose link for them. Adil Rashid was very impressive, and Saqib Mahmood, a lot of pace but not very impressive in terms of the economy rate. Three changes for Pakistan. One we've already talked about is Haider Ali, who's making his debut. Sarfaraz Ahmed, the former captain of Pakistan, comes in place of Mohammad Rizwan, and Wahab Riaz, that's more of a forced change as he comes in place of Muhammad Amir. So that is Pakistan with three changes today for the third and final T20 international in Old Trafford. Now, from Pakistan's perspective, one man who is, of course, a lot of criticism because he's not at the right side of 30s at the moment, 39-year-old, and there's a lot of questions, should he be part of the team or not, but he did answer his critics very well by scoring 69, and that was the reason Pakistan lifted their total to 195, and that is Mohammad Hafiz, and he's going to be the player to watch today. How much of a confidence booster was that for him, that innings, Fadi? It's about him coming into a series where everybody is questioning yet again. But if you look at his record, last 10 innings, he's been absolutely brilliant. He's been good with the ball as well, but he just needs to carry this on. I think for him to score today and get Pakistan to victory, that'll be sort of the icing on the cake. He's done brilliantly. I don't think you can look sort of at his age now or say that he's not welcome into that 11, but the icing on the cake, what he'll want now is to get some runs and bowl well and contribute to a Pakistan victory. His numbers has been phenomenal. I mean, in the last couple of years, what Mohammad Hafiz has delivered for Pakistan, nearly averaging 80 and then more than 140 of strike rates is very, very impressive. The big question, the last match that we were talking, just we touched a bit about on it, Ramiz bhai, before going into the break, was that he was not given the ball. Why do you think that was the case? And because he is a very good off spinner who has proved time and time again against the left-handers, it wasn't uber obvious, wasn't it? Yeah, first on Basim's comment that, he answered his critics and that we should be now questioning his position in the playing 11. I think it's clearly Basim is missing the larger point and the bigger picture. At 39, if he has a dip in form, his dip will remain there for a very long time, because his reflexes are getting slower, obviously, and it happens to the best in the business. They struggle in getting back to the top gear. So you can get into top gear when you're in your 20s or early 30s, but the moment you hit the 40s, it's almost backup time for you. And in the World Cup season, I don't know how long we can carry on by taking a lot of risk with Hafiz. Fine, his present form is great, but it's about future of Pakistan. And since we are sort of getting a bit of a hammering whenever we are in a away tour in a T20 contest, and whenever we play against quality sides, we're not winning. So I'd like to see those numbers being converted into winning numbers. What happens to Pakistan team when he scores runs? That is the critical part, because you have experience in the playing 11, because they can win you matches. They understand the match situation, they read the situation well, and then they apply their faculties and take a lot of confidence from their experience and put it to use. So that is regarding Hafiz's future. But I think he should have been used. If he can bowl, if he wants to bowl, then I think against left-handers his record is brilliant. So against Morgan and Malan, not using him was a big mistake, clearly.
Clearly, and of course, he looks to be part of the plans for Pakistan in the next two World T20s, or at least the first one, which is in 2021 in India. Now, moving from Hafiz, who was 39, to a youngster who is up and budding all-rounder for Pakistan, and he has shown a lot of promise too in PSL as well as in Pakistan colours. And Shadab Khan, so he's somebody who is very much for the future, and in fact in the present too, this year's PSL, he was extremely impressive. Yeah, I think himself being captain of the franchise and promoting him up the order, that added to his ability with the bat. He always sort of exudes confidence or says that he's very good with the bat, but now that he's got runs under his belt, I think everybody now knows that he's the all-rounder in white ball cricket that Pakistan wanted. And we saw an earlier stat where recently Pakistan weren't doing too well with the ball, but it's only Shadab Khan who's really carried the attack in T20s. I think him and Hassan Ali, when he was in form, that's why Pakistan were bowling so well. But even still, even in that previous game, you can see the best bowler was Shadab Khan. It's sort of unfortunate that he hasn't been given a chance with the bat yet. And hopefully he can become that all-rounder who can bat up the order in white ball cricket and add a little bit of depth to the Pakistan batting lineup too. Yeah, he did bat up the order at this year's PSL for Islamabad United, where of course he was captaining the side too. We'll take a very short break here on Straight Drive and be right back. Lots more. We're not far away from live action. There's news that England have won the toss and have elected to field. तो जीतना हमारे हाथ में नहीं, मगर कोरोना वायरस से जीतना हमारे हाथ में है। बस साबुन से बार बार हाथ धोएं। लाइफ बॉय और पाकिस्तान क्रिकेट कहते हैं, हाथों की हिफाजत पाकिस्तान की हिफाजत। आपकी तरह सॉलिड अमरीली स्टील्स। क्या ये दाग रगड़े बिना निकलेंगे? तो हो जाए मुकाबला। रगड़ा वर्सेस नया एरियल तगड़ा। नया और पहले से बेहतर एरियल, जिसका डबल एक्शन फॉर्मूला करे गहराई से सफाई सिर्फ एक धुलाई में। The all-new range of Tolerance refrigerators जो बनी है यूरोपियन टेक्नोलॉजी से। इसकी नेचर लॉक टेक्नोलॉजी से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रहे फ्रेश पूरे 20 दिन तक, तमाम न्यूट्रिएंट्स में, क्योंकि टॉलरेंस रिलायबल है। कितने फासले, कितनी दूरियां, मीलों तक चलना है तुझे। तुम गिरना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि तुमसे जुड़ी हैं कितनी ही ख्वाहिशें, कितनी ही उम्मीदें, क्योंकि जो तुम गिरे तो समझो वो सब गिरे। नए सर्विस टायर्स बनते हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जर्मन टेक्नोलॉजी से, जो दे दूसरे टायरों से 40% तक ज्यादा लाइफ। ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। आपका फूड का ऑर्डर। जीते से ऑर्डर करो कुछ भी कभी भी कहीं भी। यूज कोड जीते and get flat 40% off on food and 15% off on pharma and grocery. 6,000 super battery fast charging. 6,000 always power on. Always power on. Techno Mobile. The all-new range of Tolerance refrigerators जो बनी है यूरोपियन टेक्नोलॉजी से। इसकी नेचर लॉक टेक्नोलॉजी से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रहे फ्रेश पूरे 20 दिन तक, तमाम न्यूट्रिएंट्स में, क्योंकि टॉलरेंस रिलायबल है। क्या ये दाग रगड़े बिना निकलेंगे? तो हो जाए मुकाबला। रगड़ा वर्सेस नया एरियल तगड़ा। नया और पहले से बेहतर एरियल, जिसका डबल एक्शन फॉर्मूला करे गहराई से सफाई सिर्फ एक धुलाई में। कितने फासले, कितनी दूरियां, मीलों तक चलना है तुझे। तुम गिरना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि तुमसे जुड़ी हैं कितनी ही ख्वाहिशें, कितनी ही उम्मीदें, क्योंकि जो तुम गिरे तो समझो वो सब गिरे। नए
सर्विस टायर्स बनते हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जर्मन टेक्नोलॉजी से जुड़े दूसरे टायरों से 40% तक ज्यादा लाइफ। ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। Thanks for staying with us on Straight Drive. Of course, England won the toss and have elected to field. For Pakistan's perspective, Haider Ali is years of age. लेकिन PSL में असल में because बहुत ज्यादा पजीराई हासिल की। क्या अच्छी बात लगी आपको रमीज भाई ऑफ हैदर अली इन द PSL? देखिए, ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं और बच्चा घबरा जाते हैं एक सुपरस्टार और दूसरा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेल रहे हैं। सो एक तो दबे नहीं, अपने आप को प्रूव करना था और अपने आप को बैक किया उन्होंने। और फिर जो 6 हिटिंग एबिलिटी है वो खासी इन्होंने उससे जो है वो PSL को जगमगा दिया। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी क्रॉस बैट से मिड विकेट पे छिटका लगाने की ज्यादा कोशिश करते हैं। इनके पास इतनी स्ट्रेंथ है और इतना टैलेंट है कि लॉन्ग ऑन पे आराम से लगा के ले सकते हैं। सो एक तो ये चीज इनको ठीक करनी है और जल्दी नहीं करनी है। देखिए, मॉर्गन जो आपके लिए बेहतरीन एक तरह से सिचुएशन में एक गलती भी वो नहीं कर सकते थे अफोर्ड और नहीं गहरा सांस लेते थे और उनको पता था कि किस लाइन और लेग पे कौन सी शॉट खेलनी है। सो आई एम जस्ट होपिंग कि हैदर अली जो है वो जल्दी ना करे और प्रेशर पे ना आए, क्योंकि अगर आप इनकी रेंज और इनके टैलेंट की बात करते हैं तो मुझे तो आपने तो बाजी इनको और भी पहले से देखा है। जनरली मुझे बातें सुनाते होते हैं कि मैं अंडर 19 के स्टार्ट्स ले आता हूँ, लेकिन इस मरतबा अंडर 19 वर्ल्ड कप में आपने बड़ा क्लोजली उनको वॉच किया। हाँ बिल्कुल, ही वाज वेरी इंप्रेसिव अंडर 19 वर्ल्ड कप एज वेल। हमारा जो फेलो कमेंटेटर है इयन बिशप, वो किसी की ऐसी तारीफ नहीं करते। ही वाज वेरी इंप्रेस्ड बाय द वे हैदर अली प्लेड एंड look at the strike rate 148. I believe I saw somewhere that PSL में for Pakistani players he's got the best strike rate. Yes, it was in Pakistan with better wickets, but even still the ability to score that quickly and hit those big shots is a huge advantage in T20 cricket. The other factor here is that Pakistan are batting first, so that might just be good for him because they not have the pressure of chasing. But the problem here is that he's played mostly as an opener. In the PSL he batted 3, maybe once or twice he batted 5 or 6. So it'll be interesting if they use him at 5 or 6, how he adapts to that. Obviously they want him as a finisher, but he's more comfortable batting up the order. Pakistan of course batting first. Quick predictions ले लेते हैं रमीज भाई। 195 was not enough. Today will 195 be enough for Pakistan? Do you think so? That's what they'll aim? इसमें वैसे नहीं खेल सकते हैं। I think they got to just relax and take it over by over. पहले से नहीं आप ऐसे कि मैं 200 करेंगे, वो फिर 150 भी नहीं होगा। सो हमें पता है कि पाकिस्तान की रेंज ऑन द डे 220 भी हो सकती है या 90 पे भी आउट हो सकते हैं। सो आई थिंक इनको सिचुएशन देख के फ्रेश पिच है तो थोड़ा सा अपने आप को ध्यान से खेलें और किसी तरह से जीतने की बस कोशिश करें। जीत इम्पोर्टेंट। Thank you so much रमीज भाई, बहुत कम वक्त बचा है हमारे पास। Thank you so much Bazi. We look forward to your company and we'll take a very short break and be right back with live action. आपकी तरह सॉलिड अमरीली स्टील्स Red Bull gives you wings. जब दिल चाहे जहाँ दिल चाहे
KNN's Bakery of fresh goodness. बस 10 मिनट रखिए, निकालिए और कीजिए गर्मा गर्म enjoy. KNN's Bakery of fresh goodness. पिछले 50 सालों की तरह हम ऐसी ही खुशियां बांटते रहेंगे. Spread the joy. क्या ये दाग रगड़े बिना निकलेंगे? तो हो जाए मुकाबला. रगड़ा वर्सेस नया एरियल तगड़ा. नया और पहले से बेहतर एरियल, जिसका डबल एक्शन फॉर्मूला करे गहराई से सफाई, सिर्फ एक धुलाई में. Everybody, don't you worry. Easy pasa con los ojos ya. Easy, papá para easy, easy, papá para easy, easy. जो चाहो हो जाए, हर नंबर से कहते हम. Welcome, 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 welcome. पाकिस्तान के नंबर 1 पेमेंट्स ऐप पे every मोबाइल नंबर इज वेलकम. इजी पैसा, इजी है. आपका फूड ऑर्डर जीते से ऑर्डर करो, कुछ भी कभी भी कहीं भी. यूज कोड जीते and get flat 40% off on food and 15% off on pharma and grocery. Introducing Peak Creams Choco Lava. Peak Creams Choco Lava, bigger and chunkier. आपका फूड ऑर्डर जीते से ऑर्डर करो, कुछ भी कभी भी कहीं भी. यूज कोड जीते and get flat 40% off on food and 15% off on pharma and grocery. गार्नियर मेन एक्नो फाइट सोप के मुकाबले में 99.9% पिंपल्स को खत्म करे. तो फिर एक्ने, ब्लैकहेड्स, ऑयली स्किन को करो नॉक. नया गार्नियर मेन एक्नो फाइट. पिछले 50 सालों की तरह हम ऐसी ही खुशियां बांटते रहेंगे. Spread the joy. क्या ये दाग रगड़े बिना निकलेंगे? तो हो जाए मुकाबला. रगड़ा वर्सेस नया एरियल तगड़ा. नया और पहले से बेहतर एरियल, जिसका डबल एक्शन फॉर्मूला करे गहराई से सफाई, सिर्फ एक धुलाई में. आपका फूड ऑर्डर जीते से ऑर्डर करो, कुछ भी कभी भी कहीं भी. यूज कोड जीते and get flat 40% off on food and 15% off on pharma and grocery. आपकी तरह सॉलिड अमरीली स्टील्स. And it's a beautiful early evening. The sun is shining. It's been a gorgeous day. We've moved pitches slightly. The city side going towards Manchester is a really biting hit. क्या ये दाग रगड़े बिना निकलेंगे? तो हो जाए मुकाबला. रगड़ा वर्सेस नया एरियल तगड़ा. नया और पहले से बेहतर एरियल, जिसका डबल एक्शन फॉर्मूला करे गहराई से सफाई, सिर्फ एक धुलाई में. The all range of tallest refrigerators जो बनी है यूरोपियन टेक्नोलॉजी से. इसकी नेचर लॉक टेक्नोलॉजी से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रहे फ्रेश पूरे 20 दिन तक तमाम न्यूट्रिएंट्स में, क्योंकि टॉलरेंस रिलायबल है. सुपर नहीं तो 4G नहीं. जैज़ सुपर 4G, पाकिस्तान नंबर 1 नेटवर्क. दुनिया को बता दो. तुम गिरना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए नए सर्विस टायर्स बनते हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक. जर्मन टेक्नोलॉजी सर्विस जैसी, तो फिक्र कैसे. Introducing Peak Creams Choco Lava. Peak Creams Choco Lava, bigger and chunkier. Zindi Biryani. Balochi Sanchi. Karchole. Pakistan. Camon 15, my camera phone, Techno. Never give up. I'm always It's be a lot easier to put to the boundary. You'll see pitches like this so often at Old Trafford, especially if the sun shines. And they have a grey colour to them. It's just like a slab. There's very little grass, there's certainly no live grass, but it's cracked. So it's cracked and dry.
Finger spinners don't usually spin it on this surface, but there's a chance for wrist spinners. Pakistan, captain in the team. Just thinking back to that second T20, both bowling attacks, you could see what they wanted to do, but it didn't just happen. Yeah, you're right. A lot of variations were missed. We saw a lot of low full tosses from both sides, the slower ball bounces, too short. Bit of rustiness maybe, lack of white ball cricket, and they'll be desperate to improve things today. Always look at strike rates. Top order batsman. Okay, is that? He wanted to improve, and I'm sure he does. And up to 150. A real handful and dangerous. Slipping position, fine leg inside the circle, deep square leg for the left hander. Saki Mahmood looks a real athlete, he's good build, terrific action. Just in his first over, high 80s. Lad who I don't think this is his strong suit, by the way, T20. I think he'll be a fabulous red ball cricketer. He's had injury problems, he missed the whole season. This lad developed Saki Mahmood, and you can think about Wakar Yunis, the way that he got into position with a slightly slinky action to get the ball reversing. I think he could do this. Just drop his hand a little bit more, drop his bowling arm a touch more and get that little sling in. Bolton, lad, it is. Before Saki Mahmood. बस मिलाओ *506# for Jazz Weekly Supermax. सुपर नहीं तो फौजी नहीं. Pakistan's #1 network. दुनिया को बता दो. बिस्कुट नहीं बिस्किट. मेरे दिल को करता है हिट. बिस्कुट नहीं बिस्कुट. तेज ये हाथ चलाए. तेज सब कुछ करे. बड़ी तेजी से बनाए. दाग भी निकलेंगे तेजी से. नया सर्फ एक्सेल 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज. सर्फ एक्सेल. गार्नियर मेन एक्नो फाइट सोप के मुकाबले में 99.9% पिंपल्स को खत्म करे. तो फिर एक्ने, ब्लैकहेड्स, ऑयली स्किन को करो नॉकआउट. नया गार्नियर मेन एक्नो फाइट. इसकी नेचर लॉक टेक्नोलॉजी से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रहे फ्रेश पूरे 20 दिन तक. तमाम न्यूट्रिएंट्स मिले क्योंकि टॉलरेंस रिलायबल है. KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन. आपकी तरह सॉलिड. Oh, he's bowled him a terrific start. That's the way, Moe. Turn the game. Oh, Fakar Zaman cannot believe it. What a beauty first up. Just completely caught on the crease, didn't read. तेज ये हाथ चलाए. तेज सब कुछ करे. बड़ी तेजी से बनाए. दाग भी निकलेंगे तेजी से. नया सर्फ एक्सेल 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज. सर्फ एक्सेल आपकी तरह सॉलिड. अमरीली स्टील्स.
जब दिल चाहे जहाँ दिल चाहे KNN's biggest street of fresh goodness. बस 10 मिनट रखिए, निकालिए और कीजिए गर्मा गर्म enjoy. KNN's biggest street of fresh goodness. मुझे तुम्हारा फ्यूचर रोशन नजर आ रहा है। जबरदस्त एडवेंचर्स, कामयाब बिजनेस और रोमांस। तुमने ये सब मेरे हाथ से पढ़ा है? हाँ।